नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक क्रिकेटर के लिए, क्योंकि जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो तो जैसे आपने सही कहा कि ज़रूर टैलेंट तो होती है इस लेवल में पहुंचने के लिए, और इतना क्रिकेट खेलने के लिए आपको टैलेंट की तो ज़रूरत है ही है। पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये 100 टेस्ट मैच खेलना एक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लॉन्जेटिविटी। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फ़िटनेस है, आपकी रेजिलियंस, आपकी एबिलिटी टू हैंडल सक्सेस फेलियर। क्योंकि ऐसी जर्नी में जब आप 100 टेस्ट मैच खेलते हैं तो ऐसे हो ही नहीं सकता आपने उतार चढ़ाव ना देखे हों। और वो उतार चढ़ाव आते हैं, आपको उसको पार करना पड़ता है, आपको उसको सहन करना पड़ता है, आपको अलग अलग तरीके की बॉलिंग खेलनी पड़ती है, वेरियस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फील्ड पे, ऑफ द फील्ड। क्योंकि 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए कम से कम आपको 10 साल तो लगते ही है ऑलमोस्ट। और जो पुजारा ने किया है, लास्ट ऑलमोस्ट उसको मतलब 13-14 साल लगे हैं इसमें करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स tribute to, I think, his of course his skill, which is without doubt, but tribute to so many other things, like I have mentioned. And टीम के वो एक बहुत पॉपुलर प्लेयर है, तो बड़ी खुशी होती है सबको कि उनको ये मौका मिला है कि वो 100 टेस्ट मैच खेले। और उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में भी नहीं, आगे जाके भी वो बहुत अच्छा करते रहेंगे, जैसे उन्होंने किया है इंडिया के लिए। अगर आप दिस डेकेड में देखें या 10 साल में देखें, तो चेतेश्वर पुजारा ने बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली है इस देश के लिए, जो जिससे टीम को जीत मिली है, सीरीज़ में जीत मिली है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं इस इंडियन टेस्ट टीम के लास्ट 13-14 साल में, बहुत पॉपुलर मेंबर हैं इस टीम के। तो सबको बड़ी खुशी है कि हम उसके साथ इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकें। Rohit scoring 100 and playing the way that he was absolutely brilliant, and that set the platform really for Jadeja and then Akshar to really sort of seal that game for us. But all through, I mean, I think just to be able to restrict Australia to 177 after we lost the toss and they got the opportunity to bat first was, I thought, a big credit to the bowlers. Yes, I know sometimes, later on in a game, third and fourth innings, things can happen quite quickly in India. But it's a lot of hard work to get to that point. Sometimes you have to fight really hard. You have to play really tough, determined cricket. And I think that's what we really did till that point. And I think just with both, I think even in the first innings with the ball, we didn't concede a lot of runs. We kept the pressure on. When we got a couple of wickets, our spinners were able to sort of squeeze them really well. And with the batting, we showed discipline. At times we were put under pressure as well at 160 for 5. But just Rohit held and was a glue and held that whole innings together, which is what you need, I think, in games like this. You need that one batsman who gets set to really be able to cash in and make a big one. And I think probably that was the difference. We had that one batsman who really went deep and got that 100 for us. I thought we prepared well for this particular test match. I mean, we were very lucky that we were able to get a week in Nagpur before the test series started. I thought that was a really good week for us. We had, I think, 5 sessions in that week, which were really, really good quality, with a lot of specific work. And I think all the boys felt that they got into that test match and into this series with a really good prep and some volume behind them. Both bat and ball. I think we had some volume behind us, which certainly helps. But look, I think in terms of counter-attacking batting, sure. I mean, I think sometimes on tricky wickets, on wickets where, say, tricky wickets, different conditions, on certainly different conditions, you need to play it slightly differently. On wickets like that, we do understand the value. I mean, there is a balance that you need to strike between defense
and being able to put the pressure back on the opposition bowlers. Because yeah, I think sometimes on wickets like this, if you just sit there and are not able to put the pressure back, then it can really build to a point wherein you can lose 2 or 3 quick wickets. So if you have the skills and the ability to put the pressure back on the opposition bowlers, that makes a really big difference, and that's exactly what Rohit did. I mean, he set the tone early, but then he soaked in some pressure for some periods of time. But whenever he got the opportunity, he was able to sort of put the pressure back on them, which I thought even Akshar and Jadeja did really well in that partnership. So it's a balance. I mean, you can't say that this is the only way I'm going to play, but also recognizing the fact, I think in these conditions, or in any conditions for that matter, being able to put the pressure back on bowlers is quite an important skill. Yeah, no, I mean, obviously it's always glad to have somebody back from injury. It's we never like to lose people from injury. It's not nice for us as a team. It's not nice for the individual. So I'm glad that he's back and he's fit. We'll take a call after a couple of days of training. I think he's had a long session today and he's done some training today. We'll assess it tomorrow as well once he comes in for a light hit and see how he feels in the evening. But certainly, I mean, if he's fit and ready to go and ready to take the load of a 5-day test match, then there's without doubt his performance means that he will walk straight into the side. मेरे को भी रिकॉर्ड पता नहीं था अब तक मतलब मैंने लास्ट 1-2 दिन में पढ़ा है कि लोगों ने कहा है, तो ऑनेस्टली हम लोग ये देखते नहीं हैं क्योंकि आप पिछला हिस्ट्री आप देख नहीं सकते. आपको पता है कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है तो आपको ये जो 5 दिन है इसमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. जो पास में है अलग प्लेयर थे, ऑपोजिशन शायद अलग थी, तो आप इतना हिस्ट्री में नहीं जा सकते. ज़रूर आप देख सकते हैं, तो कुछ तो हम ज़रूर सब टीमें देखती हैं कि इस महीने में जब क्रिकेट होता है दिल्ली में तो स्कोर्स क्या होते हैं, रन कौन से औसत पे बनते हैं, तो वो जो स्टैट्स डेटा है वो तो हम बहुत नज़दीकी से देखते हैं. पर हम उससे वी कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय दैट. हमको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत अच्छी टीम है, काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी उनके लड़के यहाँ पे आके खेल चुके हैं और वो भी चाहेंगे कि वो अच्छा कमबैक करें. और हमको पता है कि अगर हमको इस सीरीज़ जीतनी है, हमने पहले टेस्ट मैच से भी के पहले हमने ये भी बात की थी कि हमको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, टफ़ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. और वो एक टेस्ट मैच के बाद वो बदलता नहीं है हमारा सोच, क्योंकि हमको पता है कि एक टेस्ट मैच में कभी कभी हो जाता है जब आप बहुत अच्छे खेलते हैं और वो शायद वो लय में नहीं होते हैं, पर हमको भी पता है कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे फाइट बैक करने के लिए. वो भी कहेंगे कि उन्होंने भी कुछ सीख ली होगी लास्ट नागपुर से, तो वो भी इस कोशिश करेंगे कि इसमें वो जो उन्होंने सीख ली है इससे उसको इस्तेमाल करें इस टेस्ट मैच में. और हम भी कोशिश करेंगे कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है वो हम कंटिन्यू करें और अच्छा क्रिकेट खेलते रहें. तो पास्ट हिस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे कि अभी इस मोमेंट में रहें. हम पास्ट हिस्ट्री मतलब 87 की तो बात छोड़ो, हम नागपुर को भी छोड़ चुके हैं, वो भी चला गया, हम यहाँ पे दिल्ली आ चुके हैं. तो वो जो हो गया अभी नागपुर में, अभी यहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा. ज़रूर एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर होता है आपकी टीम में, तो बहुत मतलब एक अच्छी वेरिएशन होती है. आपने ज़हीर खान का नाम भूल गए शायद आप पर ज़रूर मतलब सेलेक्टर्स के ध्यान में ऑलवेज़ रहता है. हमारी मैनेजमेंट भी हम देखते हैं वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में अर्शदीप सिंह हाल ही में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. रणजी ट्रॉफी भी गए थे खेलने के लिए, 4-5 विकेटें ली थी उन्होंने. तो वो ऑब्वियसली यंग हैं, वो मतलब डेवलप कर रहे हैं. कुछ और लड़के हैं जो अच्छा डाल रहे हैं, पर सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर की तरह से आपको लिया नहीं जा सकता. टीम में आपको परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती. अगर 6 फुट 4 के बॉलर हैं तो आप बता दो उनको लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर. आपने कहा मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, तो अभी 6 फुट 5 कद के लड़के भी कम मिलते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड फास्ट डाल रहे हैं. पर नहीं, आपका सवाल यही है कि हम ज़रूर देखते हैं, हमको पता है इसकी इम्पोर्टेंस, पर उसमें भी आप सिर्फ लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है तो आपको लिया नहीं जा सकता. आपको अच्छी ज़हीर खान हुए, आशीष नेहरा, जिन लोगों के नाम आपने लिए, वो सिर्फ ये नहीं खेले क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर थे, वो अच्छे बॉलर भी थे और परफॉर्मेंस भी थी. तो कोशिश ज़रूर रहेगी और बहुत अच्छी बात है. जैसे मैंने कहा वाइट बॉल में अर्शदीप सिंह कर रहे हैं, खलील अहमद थे, वो यहाँ के लिए खेलते हैं. यहाँ के दिल्ली का एक लड़का है कुलदीप यादव शायद, जिसने 2-3 मैचेस खेले, हम उसको भी देख रहे थे, काफ़ी तेज़ डाल रहा था लड़का.
कुछ और नाम शायद मैं भूल गया हूँ, पर है, ऐसे नहीं, बात नहीं है। एक आई थिंक मुकेश चौधरी लड़का था पूना से, तो कुछ ऐसे लड़के हैं IPL में भी हम देखेंगे ज़रूर, होपफुली उभर के आएंगे. Yeah, I couldn't be more happy, couldn't be more pleased. I think we gave him a real test. On the first day we made him bowl 22 overs, so there was no there was no slacking off. There was some thought about easing him into the test match, and I mean, we had a few discussions around the group that he's coming back after a long time, so let's see if we can manage his bowling in the first couple of days to settle him in. But the way he was bowling and how well he bowled, I think he just continued bowling and bowled 22 overs in the day. So that was, I think, a great test for him physically, and he passed that test really well. He's pulled up really well. He's looking really good, and he's been a fantastic all-rounder for us, not only in Indian conditions but even overseas. I mean, who can forget that 100 in Birmingham? I mean, it was a superb 100 with Rishabh. So yeah, I just think he's developing really well. It's a real boon to have. I think Rohit spoke about it after Nagpur. It's just a real boon to have that quality of spin and all three of them batting the way they do as well. Yeah, I mean that is. I mean, without it being written in stone and without that being a rule, certainly. We value the contributions of people who've been there, and if they've missed out due to injury, then they really deserve the right to be able to come back in. If they've performed, irrespective of what has happened in the time that they have been injured. So yes, I mean that's something that I can't answer for everyone, but certainly that's certainly the outlook of the team management. And yes, I mean Shreyas has played well against spin, but what's really stood out has been his temperament. I mean, we've been in quite a few pressure situations with Shreyas around, right from the first Test match that I played, his debut game in Kanpur, the last year and a half. And every time we've been in a pressure we've been in some tough situations. He and Rishabh and Jadeja really have been the ones who've been bailing us out and playing those critical knocks. I mean, his temperament in Bangladesh when we were under the pressure along with Ashwin. So I think that's something that's a really good sign. Obviously, along with his skill of playing spin really well, he's spent a lot of time in domestic cricket before getting in, so he obviously understands. He knows how to get runs. But I think at this level also what really counts is your ability to deal with those pressure situations, that temperament, that ability to find solutions and find answers when you're under pressure. And I think from the small sample size that we have, he's been very, very good at that. So it'll be nice to have him back, and he certainly has been one of our better players, so he deserves it. And I think people in the team understand that as well. They know that if they are replacing someone who's injured, then if the person comes back, then he will probably come back, and the same thing will be followed for them as well. If they get injured, hopefully we'll be able to give them the same treatment and the same treatment as well.